See the question. I equals to 10, I less than equals to 10, है ना? Then system dot out dot println I plus equals to true. Okay, so this is the question, and but here I'm making the changes. I minus minus. Now tell me the output for this. See the code again. I equals to 10, I less than equals to 10, system dot out dot println I minus minus. Now give me the output, then the how many time loop will be executing. See that. I is what 10. अभी मैं यहाँ क्या लिखूंगी 10 less than equals to 10. Condition true. Condition true. 10 less than equals to 10. Condition is true. Okay, then print I. So it will display 10. Tick, right 10. Then minus. Now the value of the I will be 9. So 9 less than equals to 10. Again condition will be true. Okay. Then it will display. What it will be display? 9. Then again minus minus 8. Then again minus minus 7. Till what? Till the infinite. Why it is infinite? Because यहाँ हमने क्या दिया है I less than equals to 10 और हम यहाँ पे I की वैल्यू को लेस करते जा रहे हैं ना, तो it will not false. This test condition never come to be false. Test condition never come to false. तो क्या हो गया ये? Infinite loop. So this is your infinite loop. How many times this loop will execute? Infinite time. See that. Infinite time this loop will execute. See that. Here I'm compiling. Compile. Execute. See. It's going on and going on only. This is your infinite loop. Right? And I'm stopping this loop. Yes. Now, if we are making the changes, see that I equals to 1 and at the place of I minus minus, I'm not putting I minus minus here, I'm putting here I plus plus. Okay. Now tell me the output for this. Now tell me the output for this. What will be the output? Is there any error? Or this program is out of error? Yes, see, this is the code. Then compile. Then execute. Two, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 to 11. How many time loop is executing? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Loop is executing 10 times, but output is coming 2 to 11. Why? See that. I is 1. Okay. So your test condition will be 1 less than equals to 10. Condition is false. Then here is what? I plus plus. Okay. I plus plus means what? Increment. I plus plus is what? Increment. Okay. तो यहाँ पे आके I की वैल्यू कितनी हो गई? 2. Then it will print what? 2. Then the next line, new line will come. Okay, 2 print करेगा और next line में आ जाएगा. Then after that, it will go to the test condition. Okay, देखो यहाँ पे display होने के पहले increment हो रहा है. Okay, then it will go to the test condition. अभी test condition क्या बनी? 2 less than equals to 10. Okay, condition true. मगर फिर से change हो गई value increment में आके 3. तो क्या print होगा? 3. Okay, then it will display 3. Like that, कहाँ तक? Till the 10 तक.
है ना। फिर ये सब करने के बाद जब लास्ट में वैल्यू आएगी 10, ओके 10 हो गई, तो इट विल बी लाइक दैट 10 लेस देन इक्वल्स टू 10, अगेन कंडीशन विल बी ट्रू, देन इंक्रीमेंट इज देयर, सो इट विल डिस्प्ले 11. So in your last line it will display 11, and then again it will go to the test condition, 11 less than equals to 10, condition false, बाहर आ जाएगा. So your output will be 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and then 11, right? And how many time loop is executing? 10 times. 10 times loop is executing. Time loop is executing. Okay, understood? Okay, one more changes. ये साथ के साथ लिखते जाना है. If this increment I'm writing here, I'm not doing here this increment, okay, then tell me the output. See the question again. Plus plus I less than equals to 10. Okay, then this system.out.println. Okay, this time I'm making one more changes. I'm not giving println. Here I'm giving I plus space. Okay, now tell me the output for this. See over here, compile, and I'm doing execution. Void में 2 3 4 5 6 7 8 9 10, only 10. So loop, how many time loop is executing? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 time this loop is executing, not 10 time. Why this loop is not executing the 10 time when it is displaying from the 2? See, I is 1, okay, then here pre-increment, this is what pre-increment means, it increase the value first, then use it. Okay, change the value first, pre-increment, post-increment. If you remember the difference between pre-increment and post-increment, pre-increment may change the value first, then use it. To change it to 2 less than equals to 10, right? Condition true, तो क्या display होगा? 2, then space. ओके, देन फिर यहाँ पे आके कंडीशन वापस से प्री इंक्रीमेंट है, तो क्या हो जाएगा? 3 लेस देन इक्वल्स टू 10, ऐसे चलता रहेगा. ओके, तो टिल दी 9 ओनली, बिकॉज जब 9 होगा उसके बाद ऊपर आएगा इंक्रीमेंट हो जाएगा 10 की वैल्यू जब हो जाएगी ना, तो 10 डिस्प्ले ही नहीं होगा, बिकॉज एक बार और इंक्रीमेंट हो जाएगी, राइट? सो योर आउटपुट विल बी 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, till the 10. But how many time loop is executing? 9 time. Okay, one more changes. If you am writing I plus plus, now tell the output and tell me the how many time loop will executing. See that here I'm compiling, compile, then execute the program. Void main 2 3 4 5 6 7 8 9 10 till the 11. पहले वाले में till the 11 तक नहीं था. Then how many time loop is executing? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 time loop is executing. Okay, so here output is in one line only, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, and loop is executing 10 times. Okay, अभी कैसे हुआ ये? See that this is what post increment, it is not the pre increment, this is the post increment. Okay, तो अभी देखो I की वैल्यू 1 है ना, तो 1 लेस देन इक्वल्स टू 10 कंसीडर होगी, देन आफ्टर दैट I की वैल्यू हो जाएगी 2.
आफ्टर इवेल्युएटिंग मीन्स यूज द वैल्यू फर्स्ट देन चेंज इट. पोस्ट इंक्रीमेंट मीन्स पहले वैल्यू यूज करो बाद में चेंज करो. तो यूज एज इट इज करेंगे 1. तो टेस्ट कंडीशन तो बनेगी 1 लेस देन इक्वल्स टू 10, मगर इस टेस्ट कंडीशन के बाद आई की वैल्यू हो जाएगी 2. व्हेन वी विल गेट प्रिंट तो वी विल गेट 2 नॉट 1. ओके. फिर उसके बाद ऊपर आएंगे, आई की वैल्यू 2 की 2 रहेगी. तो फिर टेस्ट कंडीशन बनेगी 2 लेस देन इक्वल्स टू 10, बट अब पोस्ट इंक्रीमेंट है तो हो जाएगी 3. अब आई की वैल्यू हो जाएगी 3. ओके, देन इट विल डिस्प्ले 3. सेम ऐसे ही जब आई की वैल्यू 10 पे पहुंचेगी, 10 लेस देन इक्वल्स टू 10. ओके, तो फिर आई की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि इंक्रीज हो जाएगी ना, तो आई की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 11. ओके, देन इट विल डिस्प्ले 11. और फिर 11 टेस्ट कंडीशन चेक होगी, 11 लेस देन इक्वल्स टू 10, तो वो फॉल्स और बाहर आ जाएगा. अंडरस्टूड?